Hello students. So in this video we will talk about projection and components of vector, which is a subtopic of the chapter vector. तो प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट हमें क्यों करना है, क्योंकि अगर आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट निकालना आ गया देन यू कैन स्प्लिट द वेक्टर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। और जब भी हमें एक वेक्टर के साथ डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन करने की जरूरत है देन इट विल हेल्प अस। सो लेट अस स्टार्ट कि प्रोजेक्शन मीन्स व्हाट। सो let us say we do have a coordinate system like this, x-axis, y-axis and z-axis, और ये है हमारा p वेक्टर, जहाँ पे हम p वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, p is equal to px I cap, py j cap plus pz k cap. So px is our x component of p vector. Similarly, py means what? Py is our y component. And what is pz? pz is our z component. तो अगर आपको दो या तीन वेक्टर दिए गए हैं, let us say वेक्टर a that is ax I cap, ay j cap, az k cap, and b vector as bx I cap, by j cap and bz k cap, then we can find out a plus b कैसे, बस डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करके, जैसे ax plus bx I cap, ay plus by j cap and az plus bz k cap. So this is how it helps us to do the various algebraic operations. Now let us find out what is a projection of vectors. So to do the projection of vector, let us say we do have two vectors like this, vector a and वेक्टर बी, और जैसे कि आप देख सकते हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, देन हम उसको कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्शन मींस व्हाट? अगर आप ए वेक्टर को बी के ऊपर लाई डाउन कर दो तो उसका कितना कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में हो रहा है. सो एज यू नो, अगर ये ए वेक्टर है और किसी सेकंड एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल कर रहा है देन it can be written as a cos theta. So component of A along B, how can we write it? We can write it like this, that this is nothing but A cos theta. Now जब हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है तो हमको पता है कि A dot B is nothing but AB cos theta. So from this, we can write the component of A along B vector can be written as A dot B divided by mod of B. Similarly, अगर हमें component of B vector निकालना है along A, पहले तो हम उसको फिजिकली समझने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. सो दिस इज माय वेक्टर बी, दिस इज माय वेक्टर ए, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए. सो दिस इज नथिंग बट बी कॉस थीटा. सो बी कॉस थीटा. सिमिलरली इस फॉर्मूला को रिलेट करके कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द mod of A. So this is the main component of one vector along another vector.